Hello students, in this lecture we will study about the digestive system of Fasciola hepatica. Now, digestive system of Fasciola hepatica, it is consists of digestive cavity which comprises of mouth, esophagus, pharynx and intestine. Look here in this diagram, in the digestive system, it comprises of what? Mouth, pharynx, esophagus and intestine. Okay, now one by one we will deal with all these parts. First one is the mouth. Mouth कैसा है इसका? It is a small circular aperture which is present at the tip of this head lobe, where it is present at the tip of the head lobe, and it is surrounded by a oral sucker. ठीक है. Now after this mouth, it leads into a short cavity called buccal cavity. Mouth aperture, it serves both for ingestion and egestion. Because its alimentary canal it is incomplete, so the mouth it serves the both purpose, that is of ingestion, यानी अंदर भी इसी से लेगा और बाहर भी वेस्ट मटेरियल इसी से जाएगा, that is called egestion. Next is the buccal cavity. Buccal cavity, it is a small funnel like cavity in the oral sucker. ठीक है, ओरल सकर के अंदर जो है छोटी सी एक फनल की तरह कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसको हम बकल कैविटी बोलते हैं. एंड दिस बकल कैविटी इट लेड्स इनटू अ स्मॉल bulb like organ that is called pharynx. Okay, pharyngeal wall, it is very thick. Here you see in this diagram that pharynx wall it is thicker. बीच में आप छोटी सी पाइप ट्यूब देख रहे हो, that is pharynx, और साइड में जो आप देख रहे हो that is its musculature. So pharynx wall कैसी है? It is very muscular. Okay, now this pharyngeal cavity it leads into a small tube behind it that is called esophagus. pharynx के बाद क्या है? छोटी सी एक ट्यूब प्रेजेंट है, that is esophagus, which is a short narrow tube and it leads into the intestine. यहाँ तक जो है लास्ट तक क्या प्रेजेंट है? intestine. Intestine here in this fasciola it is bifurcated. ठीक है, टू पार्ट्स में यहाँ से देखोगे आप, एकदम से इसोफेगस से निकलते ही ये जो है इधर और इधर टू पार्ट्स में जो है डिवाइड हो गई है. सो दीज आर इट्स टू लिम्ब्स. ठीक है, राइट लिम्ब एंड लेफ्ट लिम्ब. ओके, एंड दीज बोथ limbs they run behind up to the posterior end and ends blindly a little behind the posterior end. यहाँ पर आप देखोगे the two limbs of this intestine they are blind, they are not opening into this excretory pore, hence its intestine it is incomplete. Okay, so these two limbs again they terminate, each branch it gives out irregular branches on the inner side as well as on the outer side. इसमें आप डायग्राम में आप देख रहे हो, अंदर की तरफ जो है इसमें भी छोटी छोटी ब्रांच देख रहे हो, और बाहर की तरफ आउटर एंड की तरफ ज़्यादा बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, इरेगुलर ब्रांचेस. सो दीज ब्रांचेस दीज आर कॉल्ड सीका और यू कैन से डाइवर्टिकुला. क्या बोलते हैं इनको? सीका और डाइवर्टिकुला. दे आर स्मॉलर ऑन इनर साइड एंड लार्जर ऑन आउटर साइड. ओके, नाउ अबाउट द फिजियोलॉजी. ठीक है, डाइजेशन इसके अंदर कैसे होता है, पूरा प्रोसेस है इसमें फिजियोलॉजी में. वी नो दैट fasciola it is an endoparasite and lives in the bile duct of the host, that is sheep. So here in the bile duct it feeds on what? It feeds on bile, blood, tissue fluid, mucus and epithelial cells of the bile duct. Okay, so the nutrition it is holozoic, and nutrition process it involves various processes such as ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. So one by one we will deal with all these processes. First one is the ingestion. Ingestion means intake of food. Intake of food कहाँ से होगा? Through the mouth by the sucking action of the oral sucker and the pharynx. ठीक है, pharynx
का जो सकिंग एक्शन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड थ्रू द माउथ. ओके. नेक्स्ट इज द डाइजेशन. डाइजेशन इन दिस फैसियोला इज एक्स्ट्रा सेलुलर और यू कैन से इंटरसेलुलर. कैसा होता है? इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर एंड टेक्स प्लेस इन लूमन ऑफ द इंटेस्टाइन. कहाँ पर होता है? इंटेस्टाइन के लूमन में. और यू कैन से सीका, जो अभी हम बात कर रहे थे सीका की, वहाँ पर डाइजेशन होता है. सीका के एपिथेलियम में क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्लैंडुलर सेल्स. क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं दैट सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस. ठीक है. उन डाइजेस्टिव जूसेस में क्या प्रेजेंट होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं प्रेजेंट होती हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. ओके. नेक्स्ट इज द एब्जॉर्प्शन. नाउ व्हेन द फूड इज डाइजेस्टेड it is absorbed through the lumen of intestinal ceca by the process of diffusion. ठीक है. डिफ्यूजन प्रोसेस से जो है अंदर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स जो है. ठीक है. एंड फ्रॉम दिस पैरेन्काइमा इट इज डिफ्यूज टू द ऑल बॉडी टिश्यूज एंड मच ब्रांच्ड इंटेस्टाइन. इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड टू वेरियस बॉडी पार्ट्स. Glucose and some amino acids, they are directly absorbed through general surface of the body, for which tegument has numerous microvilli on it. After this, assimilation of food is there. Assimilation means digested food in various cells of the body is used to synthesize protoplasm. ठीक है. जो फूड डाइजेस्ट हो गया है और पूरी बॉडी के सेल्स में पहुंच गया है डाइजेशन के बाद, उसका क्या काम होता है? इट इज़ यूज टू सिंथेसाइज द न्यू प्रोटोप्लाज्म. ओके. नाउ ए पार्ट ऑफ इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड पार्ट इज स्टोर्ड मेनली एज ग्लाइकोजन एंड पार्ट इज स्टोर्ड एज फैट्स. नाउ अनडाइजेस्टेड फूड इट इज इजेस्टेड आउट थ्रू द process of antiperistalsis through the mouth. So this process it is called egestion.